going to study regionalism. Regionalism is an important topic for civil services means examination. Regionalism comes under Indian society in GS paper 1. The importance of the topic can be calculated from the fact that how many questions have been asked from this topic in previous year. For example, UPSC has asked two questions in 2020, one question in 2018, two questions in 2016, and one question in 2013. The question asked by UPSC were very basic and directly from the basic concepts of the regionalism. So now let us look at the index under which we are going to see what things we are going to study in regionalism. We will first look at the definition, then we will understand when regionalism become problematic, then we will study politics of regionalism, then factors of its manifestation, then we will study types of regionalism, and then we will look at the positive and negative impacts of regionalism, and in the end we will see a way forward or solution to the regionalism. So now let us look at the definition of regionalism. Regionalism, simply understood that, or the simple meaning of regionalism can be when a certain group of people begin to identify their loyalty to a particular region. For example, when people begin to identify themselves as Bengali, Punjabi, or Marathi in place of Indian, then it can be said to an example of regionalism. Keep one thing in mind, regionalism in itself is not a problematic. It becomes problematic only when regional identity overtakes national identity or regional issues overtakes national issues. It also becomes problematic when the interest of region A is pitted against the interest of region B. Then it becomes problematic. The problems of regionalism can also be connected to the politics of regionalism. So question arises, what is politics of regionalism? Politics of regionalism simply means mobilization of voters or mobilizing votes on the basis of regional identity. Then question arises how political parties mobilize vote on the basis of regional identities. What political parties simply will do? First, they will incite local feelings. By inciting local feelings, what they will do? They will distract people from original issues of employment, poverty, hunger, lack of development. So they will distract people from all the issues. And what will be the result? They will mainstream nativism in politics and garner votes on the name of regionalism. So this is how political parties brings regionalism in politics. But then question arises, why people accept regionalism? What is in regionalism that people easily accept it? People accept regionalism because political parties give them allurement of more representation, ecological and cultural preservation. Sometimes they were given the uh, allurement of domination. If they will vote them, then the region will be dominated by them only. Or sometimes they are giving the fear of domination of outsiders. If they will not vote them to the power, then someone will come and they will promote outsiders. So this is how political parties promote demographic dominance. Sometimes they will uh, do emotional appeal to garner votes on the name of regionalism. So this is how political parties appeal to people to give vote to them. And these are the reasons why people accept regionalism in politics. But regionalism becomes problematic only when it promotes secessionist tendencies or when it turns violent. Then it becomes problematic. So now let us look at the factors of its manifestation. Actually, what happens during our independence?
Various princely states were amalgamated into India, but the people who were living in those princely states still have their loyalties to the erstwhile regional boundaries. And this became a major factor of regionalism. Another factor of regionalism is cultural distinctness. Person belonging from a region A may feel culturally differentiated from the person belonging from region B. So this may also promote feeling of regionalism. Geographical differentiation also promote feeling of regionalism. For example, a person belonging to Uttarakhand is having a different geography from a person belonging to Rajasthan. So due to this geographical differentiation, they may develop a feeling of regionalism. Indian political history also played a vital role in promoting regionalism. Like Maharashtra is having such a political history that regionalism is high in Maharashtra, whereas West Bengal is having a minimal presence of regionalism because of its communist history. So this is how Indian political history promotes regionalism. Sometimes shared history, folklores, etc. also become the basis of regionalism. Languages also promote a major role in giving way to regionalism. For example, people from different languages may have different feelings to the different regions. So this is how regionalism manifests itself. Now let us look at the types of regionalism. Regionalism can be divided into three types: intrastate regionalism, interstate regionalism, and suprastate regionalism. In interstate regionalism, in intrastate regionalism, what will happen? One part of the state will be pitted against the whole state, or when a part of the state is against the remaining state, then it is an example of intrastate. Here, example can be taken from Bodoland. In interstate regionalism, one state against the another state, as we have seen in the case of Kaveri river water dispute. In Kaveri river water dispute, Tamil Nadu is against Karnataka. So this is an apt example of interstate regionalism. In suprastate regionalism, a group of state is against another group of state, as we have seen in the case of North-South divide. Here example can be taken from the promotion of Hindi language. Northern states promote Hindi language, whereas southern states oppose its imposition. So what happened? A group of states from northern India is against the group of states in southern India. So this is how supra-state regionalism works. Now let us look at the positive impacts of regionalism. Regionalism provides source of identity to the people. For example, when you identify yourself as Bihari, Bengali, so this is how you are giving identity to yourself by quoting a reason that you are belonging from a Bihar region or you are belonging from a Bengali region. So somewhere regionalism provides you an identity. Regionalism also helps in the economic development of backward regions. जैसे कि हमने देखा उत्तराखंड के केस में, उत्तराखंड जब यूपी का पार्ट था तो क्या था कि उत्तराखंड में उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बट जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो आज उत्तराखंड आपका वन ऑफ द हाईएस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है. Regionalism also led to the balanced development of a nation. What happened? Basically, political parties will do a balanced development because of the fear of protests और because of the fear of regionalism. So वो क्या करेंगे? वो आपका अपने सारे के सारे पार्ट्स में आपका एक अच्छा डेवलपमेंट करके चलेंगी political parties. Regionalism sometimes also lead to the fulfillment of local demands of the people. One more thing about the regionalism. Regionalism promote competition among different states. कैसे कंपटीशन को प्रमोट करेंगे? सपोज कर लो स्टेट ए ने आपका कुछ आपका फायदे दिए या किसी भी प्रकार से आपका अट्रैक्ट किया बिजनेस को, बहुत सारे आपका टैक्स में आपका छूट दे करके, इस छूट की वजह से ए स्टेट में आपका इन्वेस्टमेंट आया, तो इस चीज को देखते हुए बी स्टेट भी क्या करेगा, अपने यहाँ भी आपका छूट देगा ताकि अपने यहाँ और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके. तो इस तरह से आपका कहीं ना कहीं रीजनलिज्म क्या करता है, दो स्टेट्स के बीच में आपका एक कॉम्पिटिटिव भावना को भी प्रमोट करता है. So this is how regionalism promotes competition among different states. So now let us look at some negative impacts of regionalism. Regionalism negatively impact internal security. How? Because sometimes regional protest may turn into violent protests. जैसा कि हमने देखा किसके केस में, नेल्ली मेसेकर असम में हुआ था उसके केस में.
जब ये वॉयलेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज खड़ा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि रीजनलिज्म ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम बिकॉज रीजनल डिमांड्स आर प्रमोटेड एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल डिमांड्स, देन इट ऑल्सो बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। रीजनलिज्म ऑल्सो बिकम्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज क्या करता है, ये कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। क्यों नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? क्योंकि लोकल पीपल आपसे क्या करेंगे, रीजनलिज्म की वजह से बिजनेस जो मैन है उनको आपका फोर्स किया जाता है कि लोकल लोगों को आप हायर करो, और हो सकता है कि जो स्किल्स कंपनी को चाहिए वो लोकल लोगों में ना हो। कई बार कंपनीज को फोर्स किया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट दें सिर्फ लोकल्स को, तो इस वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल नेगेटिवली इम्पैक्टेड। समटाइम्स क्या होता है कि आपका रीजनलिज्म का फायदा लेके टेररिस्ट वगैरह उस चीज का फायदा उठाते हैं और आपका बहुत सारे अटैक्स वगैरह करवा दिए जाते हैं, जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट के केस में देखा। चाइना सपोर्ट करता है, कई बार आपका बहुत सारे आतंकवादी संगठन आपके इस चीज का फायदा उठाते हैं। और लास्ट थिंग, समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज विल also exploit regionalism to garner votes in the election. So this is how regionalism impacts national security और economic environment of a nation. So इस तरह से आपका regionalism को आपका ये लोग इम्पैक्ट करते हैं। बट एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि regionalism के इतने अपन ने देख लिए फायदे क्या थे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख लिए, बट एक चीज देखने को मिलती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे रीजनलिज्म हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली, तो हम अब देखने वाले हैं कि भी करेंट ट्रेंड्स क्या है रीजनलिज्म की। अगर हम करेंट ट्रेंड्स की बात करें रीजनलिज्म में, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपका आउटसाइडर्स लोकल से ज्यादा है, तो वहां पे हमें रीजनलिज्म आपका देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आउटसाइडर्स लोकल लोगों से ज्यादा होंगे वहां पे हमें रीजनलिज्म बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। या फिर ऐसे स्टेट जहाँ पे आउट माइग्रेशन का कल्चर बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार हो गया, यहाँ पे आपको रीजनलिज्म की उतनी ज्यादा फीलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा आपका हो गया पॉलिटिकल हिस्ट्री। कुछ स्टेट्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री इस तरह की है कि वहां पे आपको माइग्रेशन के खिलाफ उतने स्ट्रॉन्ग व्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का कम्युनिज्म, वहां पे आपको आउट माइग्रेशन को लेके उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई इस चीज के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म। द बिगेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द रीजन। जब सारे के सारे रीजन का बैलेंस डेवलपमेंट होगा तो किसी के अंदर आपका लेफ्ट आउट की फीलिंग नहीं रहेगी, तो फिर रीजनलिज्म का इशू ही नहीं खड़ा होगा। दूसरा सबसे बड़ा इशू है एम्प्लॉयमेंट का। अगर हम एम्प्लॉयमेंट लोगों को वहीं पे प्रोवाइड करा दें तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, इससे इससे रीजनलिज्म की फीलिंग को कर्व करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। बट कीप वन थिंग इन माइंड, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी created in agriculture because agriculture is having disguised unemployment, and employment can also be limited in service sector बिकॉज सर्विस सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, सर्विस सेक्टर में स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमारे लिए सॉल्यूशन क्या बचता है, हमारे लिए सॉल्यूशन बचता है आपका मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, लोगों की आपका फीलिंग भी बढ़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप होगी नेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट हम मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट करके आपका रीजनलिज्म की फीलिंग को क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। एक काम हम और कर सकते हैं, जो हमारा एग्रीरियन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो आपका अभी क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। हम एग्रीन क्राइसिस को टैकल करके भी आपका कहीं ना कहीं रीजनलिज्म की भावनाओं को आपका टैकल कर सकते हैं। एक काम और किया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट ला के हम क्या करेंगे, जो पार्टी आपका अननेसेसरली रीजनलिज्म को यूज करती हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक स्टेप हो सकता है। एक स्टेप क्या हो सकता है कि हम नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज करें, क्योंकि आपको बहुत कम मिलती है। हम आपका स्कीम जैसे हो गई एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गई, इन सारी स्कीम्स को बढ़ावा दे सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे क्या होगा, डिफरेंट रीजन्स के लिए लोगों के मन में आपका रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाएगी, तो इससे आपका रीजनलिज्म की फीलिंग को टैकल करने में मदद मिल जाएगी। हम एक नया टाइप का आपका इनिशिएटिव चला सकते हैं, जैसे आपका हो गया निट इंडिया इनिशिएटिव। ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे इंडिया को आपका कहीं ना कहीं इट विल knit होल इंडिया इन ए वन, कहीं ना कहीं एक धागे में आपका पिरो के रखेगा पूरे के पूरे इंडिया को। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपका आईसी इंटरवेंशन को यूज कर सकती है ताकि आपको जो रीजनलिज्म का नैरेटिव है उसको टैकल किया जा सके। आईसी सिंपली मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे आपके स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम रीजनलिज्म को कहीं ना कहीं आपका टैकल करने में हमें मदद मिलेगी। अब हम